Hello everyone, welcome to my YouTube channel Visual Coding. So we have so far learned about the MySQL functions, all the date and time functions we have done. We have done the string functions. We have done about the numeric functions, right? I hope in case of any doubt, you can refer my previous videos, and also you can send your queries on the comment box. After that, we learn about the DDL and DML commands like alter table and the update table. So today, I am beginning with the concept of joining query. That is how to join two tables. Okay. So let me start. And this is my database. So this is the command to open database. Okay, fine. So in my database, we are working mainly on the two tables. So one we have seen many times, EMPL table, right? EMPL. So this is EMPL table. We have 8 columns and 10 rows. So just for revision, the cardinality is number of rows. Number of records in a table is known as cardinality, and number of columns in a table is the degree. And we have another table, DEPT. Okay, DEPT. So these are my two tables, and we will learn to join these two tables, because in actual database we have many tables. We may have thousands of tables in a database. It depends upon the volume of database, how big it is, right? So but to understand the clarity between the joining the tables, we will start a very simple concept of it, that how we join two tables. See, actually database में हमारे पास बहुत सारी टेबल होती है, and we know each table have something unique to identify. तो अगर हम बात करें EMPL टेबल की, तो in EMPL table we have EMPL number, that is EMPNO is a primary key. Okay, so that we cannot have any duplicate record. We all know the definition of primary key, that duplicate entry will not be allowed. And what I have done, in DEPT table, I have EMP ID as a foreign key. So we all know कि foreign key वो होती है जिसकी वैल्यू प्राइमरी की से रिट्रीव होके आती है, यानी कि फॉरेन की में वही एट्रीब्यूट होंगे, वही वैल्यू होगी जो कि प्राइमरी की में होगी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप इस EMP आईडी में अदर देन EMPNO कोई भी आईडी यूज नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे सो इट विल डिस्प्ले यू द एरर। So that was about the foreign key and primary key concept. You can refer my previous video in this context, right? Let's move. A simple query, joining EMPL and DEPT. So if you write select all from EMPL, DEPT. This is a simple query I'm writing, and see how long the answer is. I hope now it is clearly visible to all of you. तो चलिए हम यहाँ पर समझते हैं इसको. Okay, so we have total 40 rows. तो देखिए इसने क्या किया, EMPL टेबल में मेरे पास 10 रोज है, DEPT टेबल में मेरे पास 4 रोज है. तो 10 into 4, 40 रोज का आउटपुट आया. So this is called Cartesian product of the records. Okay, Cartesian product. So that Cartesian product, basically the multiplication of both the rows.
तो 10 into 4, 40. Okay. And I have written EMPL, DEPT. तो बेसिकली ये क्या करता है, हर एक रो का मल्टीप्लाई दूसरी टेबल की हर एक रो से ये कर देता है. ऑर्डर ऑफ टेबल it can be like this also. EMPL. So this is also again the same. The Cartesian product 10 into 4, that's the 40. लेकिन आउटपुट में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा. When you write DEPT, so each row of DEPT get multiplied with the EMPL. And when I write EMPL, DEPT, so the primary table is EMPL, which will multiply each row of the DEPT. इसीलिए आप देखेंगे आउटपुट में स्मिथ, पहले 4 टाइम स्मिथ आया, देन 4 टाइम आन्या, यानी कि स्मिथ का हर एक रो से मल्टीप्लाई. सो इन दिस वे इट गेट डिस्प्लेड. और यहां अगर आप देखें सेकंड केस में, तो पहले आन्या का स्मिथ, फिर आन्या विद आन्या, फिर आन्या विद सेट, एंड लाइकवाइज द आउटपुट वाज प्रोड्यूस्ड. ओके, बट दिस इज अ वेग आउटपुट. इस आउटपुट का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है. तो आउटपुट जब हमारे रिक्वायरमेंट है एज पर द यूजर विल अंडरस्टैंड कि हाउ this output get generated. In this case यहां पे रोल आता है the role of primary key and foreign key, यानी कि दो टेबल में कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए so that we can link both the tables. Okay, so let's see how. So we'll write a query, select, सपोज करिए कि दोनों टेबल से मुझे प्रिंट करना है ई नेम कॉमा जॉब कॉमा एड्रेस. ओके, तो ई नेम एंड जॉब आपके पास EMPL टेबल में है और एड्रेस आपका DEPT टेबल में हो गया. इट मीन्स दोनों टेबल से मैं डेटा रिट्रीव कर रहा हूं एंड देन this particular columns. So from after that you will write from EMPL and DEPT दोनों. So for EMPL comma DEPT both the tables. Now where now the conditions are there. EMPL के सारे रिकॉर्ड नहीं है DEPT में, केवल 4 रिकॉर्ड है, और 4 भी नहीं बल्कि 3 है. अन्य is repeating. So we'll write EMPL dot EMPNO, जहां पे दोनों EMPNO और EMPID मैच करें. Where EMPL dot EMPNO equal DEPT dot EMPID. Let's see output. Okay, so which row we match? It match with the, अगर हम देखें तो आन्या 8499, तो आन्या मैच कर गई. आन्या का रिकॉर्ड 2 टाइम है तो इट डिस्प्ले 2 टाइम. It does not matter that how many time. In foreign key the value, the attributes, the fields, the rows, records can repeat it, whereas in the primary key records cannot be repeated. Fine. Then we have Scott 888 4 time 8. So Scott is repeating. Scott is an analyst from Shimla. Okay, Scott analyst, sorry, from Jaipur. So it's Jaipur here. And then last we have Kuldeep from Shimla. So Kuldeep, salesman from Shimla.
So this is the main part of joining a table. The highlighted which you are probably seeing on the screen. Hope you all are with me. So where, this where condition is very important. अगर हम where हटा देंगे तो it will simply give you the Cartesian product of the rows, which is a vague output, will not be any purpose. So we require a particular column which will match in both the table. तो उसी employee का address दिखाएगा जो DPT table में है. Okay. तो I'm moving back to my screen. So let us see what kind of queries are asked from the table. He may ask you print the EMPNO, या आपसे कह सकता है ई नेम और कह दे एड्रेस. ओके, sorry, ADRESS, and he may ask you the salary. He may ask you the sale amount and DEPTN. And so DEPTN. How do you identify कि ये query आपका किस टेबल से है? And how do you identify कि this is a join query? ये क्वेश्चन हमें समझना है. So it's a simple thing that आप टेबल के कॉलम को देखिए, आप क्वेरी को ध्यान से पढ़िए. EMPNO, तो देखिए EMPNO आपके पास EMPL टेबल में है. ई नेम, ठीक है, ई नेम दो, ई नेम आपका DEPT में भी है एंड द नेम आर सेम. तो देखिए EMPNO और EMPID वैल्यू सेम है, कॉलम का नाम डिफरेंट है, बट डजंट मैटर. अगर मैं केवल इन दो एट्रीब्यूट की बात करूं तो यहां से क्लियर नहीं होता है कि आपकी ये किस टेबल का है, क्योंकि दोनों टेबल में सेम है. ठीक है, लेकिन एड्रेस, एड्रेस का मतलब आई हैव टू रिट्रीव समथिंग फ्रॉम द DEPT टेबल. सो फिर से EMPID नेम एड्रेस. नाउ सैलरी, सैलरी इज इन EMPL टेबल. तो अब यहां से क्लियर हो गया कि एड्रेस DEPT टेबल में है, सैलरी एंड DEPTNO EMPL टेबल में है, सेल और DEPT टेबल में है. It means there are few columns which we are retrieving from EMPL table and there are few columns which we are retrieving from DEPT table. So simple सी बात है, समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि ये एक जॉइन क्वेरी है. तो एग्जाम में जल्दी नहीं करना है, क्वेरी को ध्यान से रीड करना है एंड देन यू राइट द आंसर. सो लेट अस स्टार्ट राइटिंग द आंसर दिस क्वेरी. So here I'll write select EMPNO, fine. E name, अगर आप नेम भी लिखेंगे तो भी चलेगा because it's common. Now address, clear. Salary has the name Sal. Sale, obviously you must write the same attribute name which is given in the table, and DEPTNO. Okay, from EMPL, DEPT. So यहां तक की क्वेरी what it will do, ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट देगी. तो काम अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ. Where condition start, EMPL dot EMPNO equals to DEPT dot EMPID. So this where clause with the condition
I hope it is visible to all, and it will generate this output. So these are the values which exactly match from the both the tables, and the outputs are here in front of you. All are with me? I hope it is little clear to all of you. इसमें कुछ इसकी corollaries को हम चेक करते हैं. देखिए, in the same query, I'll start again. Sometimes the table names are little longer, so you can give the temporary table name. The temporary table name, just like column name, we can give a temporary table name that are known as the table alias. So like EMPNO, comma, ename, comma, address, comma, salary, comma, sale, comma, DEPTNO, from EMPL E, DEPT D. So what I did, I've given temporary name to the EMPL table as E. So in this query only, ये नोट रखना हमेशा के लिए नहीं, in this query only EMPL table का temporary name E हो गया और DEPT table का temporary name D हो गया. Now where? फायदा कहाँ है? फायदा यह है कि यहाँ पर EMPL ना लिख के अगर मैं E.EMPNO लिख दूं, so it will work. D.EMPNO. Here it is ID. Okay, so the query will give same output, but ये आपको समझना जरूरी है because exam में you may get question to give the output, to produce the output, to predict the output. So these things are important. I hope it's clear. So these are known as table alias. Now one more situation arises in the joining query. And what is that? Though in our case it is not there, but कई बार क्या होता है, टेबल में कॉलम नेम सेम होते हैं. In our case it is not there, but suppose if 8, अगर ये भी E नेम है और ये भी E नेम हो जाए, so in that case जब आप query टाइप करोगे, how the computer will understand कि आप E नेम किसका क्या चाहते हैं. Computer will not be able to pick the correct name. That will be ambiguous and it will not produce any output, it will produce error. So in that case, what you will do, you will give the table name. So you know you want E name of EMPL table, so you must write EMPL dot E name. जहां पर भी सेम कॉलम दोनों में होगा, वहां पर आपको टेबल का नाम डॉट कर देना है. There is some issue. So what is the error here? And it's good error to see. Now why this error is? So question say why this error is? This error is there because in this query is very accidentally this error occur. और luckily देखिए एक अच्छा चीज हुआ कि इस टेबल में, इस क्वेरी में EMPL टेबल का नाम मैं E कर चुका हूँ. देखिए, now there is no error. Okay, so this is a good thing which accidentally appear on the screen, but will solve the purpose. आपको टेबल का नाम complete न लिख के table alias you can use. Okay, even in normally also if there is no column same, then also if you write
D dot cell, DPD dot say, sorry, this is cell column of E. And if you write D dot sale, then also the output will be the same. Okay. Otherwise, it's not required to mention with every attribute. If you need required to mention if the attributes are same. Hope so. The concept is clear to you. So this is all about the joining query. बहुत easy है. एक दो बार प्रैक्टिस करने से ये चीज आपको बहुत अच्छे से आएगा. फाइन. या अब कंडीशन आप कुछ भी लगा सकते हैं इसमें. ओके. एक हम कंडीशन पे भी देखते हैं. सो सपोज इफ यू हैव दिस कॉलम मैच एंड अगर आपको कंडीशन एक्सटेंड करना है एंड, देन यू विल पुट एंड and you can put the condition right. If you want only detail of Ananya, you don't want to show for all, or you want to put some other condition, you can put it right like, okay, where an sale is equals to 150. Just an idea. Okay, so you find only the list of Scott. So because you can see the Scott is the only person having the sale 150. You can put anything. You want to put more than 150, so that will come. So this is how the where clause can be used in joining queries. बहुत simple है, and this is one short question asked in the exam. Okay. So I hope you understand. Still, if you feel any query, any doubt, send me in comment box. And that's all for this video. Thank you. And keep learning, keep growing. Thank you.